aux alentours de 15h55, c'est prévu l'arrivée du docteur Navinchandra Ramgoolam. Et puis il y aura ensuite l'hymne national qui sera suivi de la prestation de serment du docteur Navinchandra Ramgoolam comme Premier ministre. आपको बता दें कि 3:55 पर प्रधानमंत्री आने वाले हैं और शायद वे आ भी गए हैं। इसके बाद राष्ट्रीय धुन होगा और फिर शपथ ग्रहण समारोह। Voilà, nous assistons maintenant à l'arrivée du docteur Navinchandra Ramgoolam dans l'enceinte de la State House. Il est accompagné de son épouse Veena Ramgoolam, son cortège escorté par les moteurs de la Mauritius Police Force et le docteur Navinchandra Ramgoolam qui prêtera sous peu son serment pour servir le pays comme Premier ministre. जहाँ तो डॉक्टर नवीन रामगुलाम और उनकी पत्नी स्टेट हाउस पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत किया गया है और सभी उपस्थित मेहमान तालियों से उनका स्वागत कर रहे हैं। Dans quelques secondes, on va assister à l'arrivée du président de la République, Prithviraj-Singh-Rupan. जी हाँ, और अब कुछ ही देर में गणराज्य के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन आएंगे। C'est une cérémonie solennelle à laquelle le docteur Navinchandra Ramgoolam participe pour la 4e fois de sa carrière politique longue de 33 ans. जी हाँ, डॉक्टर नवीन रामगुलाम के लिए आज का ये दिन खास है, बहुत मायने रखता है। आज वे चौथी बार के लिए देश के प्रधानमंत्री के पद के लिए शपथ ग्रहण करने वाले हैं। Et comme vous l'avez vu, tous les nouveaux élus pour siéger à l'Assemblée nationale sont sur place, accompagnés de leurs conjoints. Il y a aussi des membres de l'Assemblée régionale de Rodrigue, des hauts fonctionnaires, des hauts représentants du monde des affaires, ainsi que des membres du corps diplomatique qui suivent cette cérémonie dans la salle. तो गणराज्य के राष्ट्रपति प्रवेश कर चुके हैं। Please take your seat. Your Excellency, Mr. Prithviraj Singh Rupan, GCSK, President of the Republic and Mrs. Rupan, Dr. the Honorable Navinchandra Ramgoolam, GCSK, FRCP, Prime Minister and Mrs. Ramgoolam, Honorable elected members of the National Assembly, Chief Commissioner Rodrigues, Acting Dean of the Diplomatic Corps, High Commissioner of India, distinguished guests, ladies and gentlemen, all protocol observed, I wish you all a very good afternoon. May I request you all to kindly put your mobile phone on silent mode, please. Thank you. On behalf of His Excellency, Mr. Rupan, GCSK, President of the Republic, and Mrs. Rupan, I have the honor and privilege to welcome you all to the State House.
on the occasion of the swearing-in ceremony of the newly appointed Honorable Prime Minister. We shall now proceed with the ceremony for the taking of the oath of allegiance and the oath for the due execution of the office of the Prime Minister. In accordance with Section 59(1) and 3 of the Constitution, His Excellency the President has appointed Dr. Honorable Navinchandra Ramgoolam, GCSK, FRCP, as Prime Minister. I now have the honor to call upon Dr. Honorable Navinchandra Ramgoolam, GCSK, FRCP, to come forward and take and subscribe the oath of allegiance and the oath for the due execution of the office of the Prime Minister, as set out in the third schedule of the Constitution. I, Dr. Navinchandra Ramgoolam, GCSK FRCP, do solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to Mauritius according to law. I, Dr. Navinchandra Ramgoolam, GCSK FRCP, being appointed Prime Minister, do solemnly affirm that I will, to the best of my judgment, at all times when so required, freely give my counsel and advice to the President or any other person for the time being lawfully performing the functions of that office for the good management of the public affairs of Mauritius. And I do further solemnly affirm that I will not on any account, at any time whatsoever, disclose the counsel, advice, opinion, or vote of any particular minister, and that I will not, except with the authority of the Cabinet, and to such extent as may be required for the good management of the affairs of Mauritius, directly or indirectly, reveal the business or proceedings of the Prime Minister or any other matter coming to my knowledge in my capacity as such, and that in all things I will be a true and faithful Prime Minister. Distinguished guests, ladies and gentlemen, this brings us to the end of today's ceremony. May I kindly request you to stand up for the national anthem, please. All distinguished guests, please remain seated. His Excellency the President of the Republic, Mrs. Rupan, Dr. Honorable Prime Minister and Mrs. Ramgoolam are kindly invited to move forward for a photo session, please.
I shall now request His Excellency the President of the Republic, Mrs. Rupan, Dr. Honorable Prime Minister Mrs. Ramgoolam, and all VIP guests in the first two rows to proceed to the veranda for some refreshment, please. All other guests remain seated, please. Voilà, vous venez de suivre la cérémonie de prestation de serment de Navinchandra Ramgoolam comme Premier ministre de la République de Maurice. Et il a été officiellement investi comme chef du gouvernement pour un mandat de 5 ans à compter de ce 13 novembre 2024. तो जैसा कि आपने देखा, प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगूलाम ने गणराज्य के प्रधानमंत्री की हैसियत से औपचारिक रूप से शपथ ग्रहण की, जो आज से लागू होता है और अगले 5 सालों के लिए सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ये शपथ ग्रहण समारोह लगा और यादगार तस्वीरें भी खिंचवाई गई। Je vous rappelle que lors de ces législatives, le Dr Navinchandra Ramgoolam avait posé sa candidature dans la circonscription numéro 5